essential for the growth of the plants. That is why they are termed as essential elements. ठीक है, रिसर्च से पता चलता है जी कि 16 एलिमेंट्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इन 16 एलिमेंट्स को इसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, if plant do not get any one of the essential element, then it may grow immaturely और उसमें कोई फॉल्ट आ सकता है। So इसलिए we have to make sure that the plant gets all these 16 essential elements. So out of these essential elements, the carbon is taken from the air, oxygen and hydrogen are taken from the water, while remaining 13 compounds they are taken from the soil. ठीक है, so carbon air से in the form of carbon dioxide, oxygen, hydrogen, water से ये जो 13 एलिमेंट्स बच गए हैं वो सॉइल से। So basically these are these 13 elements which we provide the plants through fertilizer, and they basically again increase the crop yield. So why we need fertilizers? As we know that the population is increasing day by day. So that means the requirement of food is also increasing day by day. That is why we need to speed up the crop yield or the food production. Secondly, the cultivable land or the fertile land, its area is reducing day by day because we are installing new industry, and there are a lot of housing schemes as well. पाकिस्तान में तो आपको पता है बहुत ही ज्यादा। So because of this industrial growth and housing schemes growth, the cultivable land or fertile land is reducing day by day. So that means we have very now we have lesser land available for crop or agriculture products manufacturing or production. So that means in that reduced available land, we need to increase the rate of a crop yield or crop production. For that purpose, we have to add fertilizer so that we can get a higher amount of product from a uh, from now lesser available land in terms of area. तो चूंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इसलिए फर्टिलाइजर ऐड करने पड़ते हैं ताकि क्रॉप का जो साइकिल है प्रोडक्शन का वो तेज हो सके। दूसरा, कल्टीवेबल लैंड कम होती जा रही है क्योंकि इंडस्ट्री न्यू से न्यू इंडस्ट्री लग रही है और हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, तो वो लैंड्स को ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, इसलिए कल्टीवेबल लैंड कम हो गई है, फर्टाइल लैंड कम हो गई है। इसलिए भी फिर उस लेसर एरिया से उसी हायर अमाउंट का जो डिजायर्ड लेवल ऑफ क्रॉप का वो गेन करने के लिए वी हैव टू ऐड फर्टिलाइजर्स ताकि उसकी यील्ड या प्रोडक्शन टाइम स्मॉल हो और यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हम मल्टीपल टाइम उसको अ, अ, उस कम लैंड से मल्टीपल टाइम उससे सेम क्रॉप ले सकें। सो दैट इज द बेसिकली नीड ऑफ द fertilizer. Then there are macro and micronutrients. Macronutrients are those elements which are required in higher amounts by the plants, while micronutrients are those elements which are required in lower amounts by the plants. So there are three macronutrients: nitrogen, potassium and phosphorus. ये वो एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स को हायर अमाउंट्स में चाहिए और इसलिए इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और जो बाकी के हैं वो लोअर अमाउंट्स में चाहिए इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, तो वो उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। देयर एग्जांपल आर बोरॉन, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम एंड आयरन।
Then there are two classification of fertilizers, natural and synthetic or commercial. Natural fertilizers are usually plant or animal byproducts or manures, and they contain lower amount of nutrients which are required by the plants. Synthetic fertilizers are basically synthesized in industry, and they are also known as artificial fertilizers because we are creating them. And as we are making these synthetic fertilizers for, so we can control their composition, we can control the amount of a certain element in that fertilizer product. क्योंकि हम बना रहे हैं तो हम उसकी कंपोजिशन को, उसमें मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स की अमाउंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और यूजुअली जो फर्टिलाइजर्स बनते हैं वो, उनमें जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं दे आर नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। So these synthetic fertilizers or artificial fertilizer, they are also known as NPK fertilizers, nitrogen, phosphorus, potassium, or compound fertilizers, as they are a mixture of various elements. So if a fertilizer is telling you that it has a number of 18, 51, and 20, so it means this fertilizer will have 18% nitrogen, 51% phosphorus, and 20% potassium. So why do plant need nitrogen? Nitrogen basically helps in the overall growth cycle of the plant, and it basically, you can say, has a pronounced effect than phosphorus and potassium. जो नाइट्रोजन है उसकी ओवरऑल प्लांट ग्रोथ पे एक इफेक्ट होता है, और वो उसकी ग्रोथ को स्मूथ करने में हेल्प करती है। Phosphorus is basically required by the plant for its metabolism, while potassium is required by the plant for cellular organization and for the temperature mediation, for in order to avoid some fungal and bacterial attacks. So for that purpose, this plant needs potassium. For metabolism activities, plant needs phosphorus, while nitrogen has an overall impact on the growth of the plant. सर मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? बायो पढ़ी थी कोई स्टूडेंट जिसने बायो पढ़ी हो? नो सर, बायो नहीं पढ़ी। Yes, sir. Yes, sir. ये बायो वाले आपको बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। Anabolism, catabolism भी होता है शायद. और मेटाबॉलिज्म क्या होता हमने Functions सिर्फ are मेटाबॉलिज्म present. है? वन बाय वन। सर फूड से एनर्जी लेने के लिए। फूड से एनर्जी लेना जी। और कोई? सर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। वेरी गुड। इसके अलावा कोई और डेफिनेशन? सर यही सबसे बेस्ट है, मतलब जो अभी ने अंसार भाई ने बताई। ओके, सो आई होप हंस भाई सबको मेटाबॉलिज्म की समझ आ गई होगी जिन्होंने बायो नहीं पढ़ी। तो हर लिविंग थिंग जो है ना, उसके अंदर ये प्रोसेस होता है, और उसमें बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी, आसान अल्फाज में। तो दिस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। ओके सर, थैंक यू। जी, कोई और क्वेश्चन यहाँ तक? आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। नो सर। Every CRs are requested to mark the attendance. सर कर ली। दूसरे सेक्शन ने भी? जी, हो गई है दूसरे सेक्शन की। सर एक मिनट बस.
ओके जी।